चलो अभी क्या किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने, लुईस स्ट्रक्चर मैंने बताया था, राइट। सो ड्रॉबैक्स भी हम लोगों ने देखे। अच्छा, देयर वर टू ड्रॉबैक्स, मेन ड्रॉबैक्स वी डिस्कस, दैट इज incomplete and expanded octet. Beside that, Lewis concept could not explain the stability of molecule. अगर तुम लोगों ने पूरा कंसेप्ट देखोगे तो ऐसे दे आर जस्ट सेइंग कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है, मतलब इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव कर रहा है, तो दे आर नॉट सेइंग स्टेबल, बट एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू अचीव that stable electronic configuration. But they are not talking about what kind of forces exist between the two atoms, between the two ions, between the two elements. And since there are no forces, we are not dealing with the energy. और अगर एनर्जी नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम लोग, राइट। वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग ज्योमेट्री, we are not explaining the arrangement of electrons in a molecule. And a very important thing, that is, as there is a development of quantum mechanical model of atom, quantum mechanical model मतलब orbital concept, तब ये थियरी पूरा आउटडेटेड हो गया, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते. So now the next few theories were developed. उसमें से ये एक थियरी है, इसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी. वैलेंस बॉन्ड थियरी. Valence bond theory is nothing but VBT. Now this theory is based on quantum mechanical model of an atom. Quantum mechanical model of an atom. So quantum mechanical model मतलब वहां पे हम लोगों ने ऑर्बिटल कंसेप्ट कंसिडर किया है, ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. So briefly मैं बता देता हूँ कि वो क्या है. Then I will give postulates also. We'll read postulate from textbook. I think that will be useful to link this topic with the 11th standard topic. Okay. See, ये सब concept 11th standard के textbook में भी है, but वो ना कैसे ऐसे डिटेल में नहीं दिया है. NCERT textbook में भी same way. We are dealing with examples. We are dealing with some depth. Okay. कुछ चीजें हैं जो एडिशनल भी है उसमें. Okay, and it is going to help you to understand the concept of S block, P block, D block, F block. मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा समझने के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. Okay, so वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है? What they are saying कि it is the covalent bond is अच्छा, where the valence bond theory is given only for covalent bond or coordinate bond. So there is a overlapping of atomic orbitals. Overlapping of atom मतलब ये एक atomic orbital, ये एक है, ये दूसरा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, overlap. So there is a overlapping of atomic orbital, and since there is a overlapping of atomic orbital, force of attraction between the atoms increases, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ रहा है. Now क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. अच्छा, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं? They must have nearly same energy. They must have unpaired electron with opposite spin. They must have unpaired electron with opposite spin. Okay, so valence bond theory में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? Overlapping of atomic orbital. Now, when I talk about overlapping along the axis, internuclear axis, then there is a formation of sigma bond, which is called as a strong bond. Or there may be overlapping, lateral overlapping of atomic orbital, which give
So overlapping of atomic orbitals are responsible, okay, responsible for the covalent bond formation. मैंने क्या बताया, अगर along the axis overlapping हो रहा है तो sigma bond, above and below the axis हो रहा है तो lateral overlapping बोलते हैं उसको pi bond. तो ये एक नया concept हम लोग को पता चला वैलेंस बॉन्ड थियरी से. ठीक है, समझ में आया? यस. एक मिनट, मैं केमिकल बॉन्डिंग अपने, अगर तुम लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करो और ये चैप्टर निकालो. ओपन दिस. एवरीबॉडी क्या ओपन? उसमें देखो पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहेगा. मिला? मिला क्या? गुड. तो एक मिनट मैं भी ओपन करता हूं उसको, तो एक मिनट दो मुझे. गुड. सो अभी आई डोंट नो, मेरे पास भी है वो, बट वो कौन से पेज नंबर शायद अलग रहेगा. पेज नंबर 64 पे. 64 पे है क्या? मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या वो. मेरे पास कुछ अलग ही है वो. VACPR के बीच में ओके. सो 5.4 है ना, बराबर ना? हाँ. यस. सो दिस आई एम शेयरिंग विथ यू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. In order to explain the covalent bonding, Hitler and London developed the valence bond theory on the basis of wave mechanical model. This theory was further extended by Pauling and Slater. Okay. Now, according to the तो अभी ये postulates क्या है वो हम लोग देखते. कितने postulates? Around 8 postulates है, right? Okay. Yes, Shruti, start. First, read first point. Hello, Shruti. Shruti. Yes, sir. Read the first point. A covalent bond is formed when the half-filled valence orbital of one atom overlaps with a half-filled valence orbital of another atom. What do you mean by half-filled atomic orbital? Half-filled मतलब ये ऐसा है, समझाता हूँ. When I talk about s orbital, so s orbital we represent with one box now. When it has a single unpaired electron, तो ये half-filled हो गया. Similarly, अगर मैं बात करूँ px, py and pz, right? So when the overlapping is taking place, I should have a half-filled orbital. तो ये half-filled, तो इसका भी overlapping हो जाएगा. बट अगर समझो मैंने ऐसे लिखा तो ये तीन half-filled atomic orbitals over participate in overlap. बट अगर समझो मैंने ऐसे लिखा तो यहाँ पे दो orbitals half-filled है. This will not participate in a bond formation. Is that clear? Okay. Yes. हाँ. Understood? Yes, Yogita. Second point.
The electrons in the half-filled valence orbitals must have opposite spins. Okay, so I'll tell you what do you mean by that. Suppose ये half filled atomic orbital है एक एटम का, और दूसरे एटम का जो हाफ filled ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ऐसे होना चाहिए, अपोजिट स्पिन. ओके, यस विधि, नेक्स्ट वन विधि. During bond formation, the half-filled orbitals overlap and the opposite spins of the electrons get neutralized. The increased electron density decreases the nuclear repulsion and energy is released during overlapping of the orbitals. So I'll take on again s ऑर्बिटल. तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसा है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट. जब ओवरलैपिंग होगा ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो उसमें ऐसे होगा, द स्पिन गेट्स पेयर. ओके, ये दोनों का स्पिन जो है ना पेयर्ड होगा ना, बिकॉज ये देखो ये न्यूक्लियस है इसका समझो, और ये न्यूक्लियस है. पहले एक ही था ना इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ. नाउ देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद दिस. सिमिलरली फॉर दिस आल्सो. सो अट्रैक्शन बिटवीन देम इंक्रीजेस. और केमिस्ट्री में जब भी अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी डिक्रीज होता है. जब भी अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है. ओके, यस विराज, नेक्स्ट पॉइंट. Greater the extent of overlap, stronger is the bond formed. However, the complete overlap of orbitals does not take place due to internuclear repulsions. Okay, so what do you mean by that? Let us consider ये है अपना s orbital. This is another s orbital which is involved in a bond formation. Now the overlapping, ये भी एक, this is also a kind of a overlapping. और ऐसा भी एक ओवरलैपिंग है, ये भी एक ओवरलैपिंग ही है. और ये भी एक ओवरलैपिंग है. और ये भी एक ओवरलैपिंग है. ओके, बट ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल है बट इससे बॉन्ड वीक बनेगा. ये दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका रहेगा. ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. ये क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज आफ्टर कंप्लीट ओवरलैपिंग देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस. अंडरस्टूड? ओके, ये बेसिक चीज है जो मैं समझा रहा हूं. Don't follow the order which is given in a textbook. It is given in a very pathetic way. Okay, yes. Next, Vedant Patil. If an atom possesses more than one unpaired electrons, then it can form more than one bond. So number of bonds formed will be equal to the number of half-filled orbitals in the valence shells, that is number of unpaired electrons. So इसका मतलब क्या है? Suppose I have ये p ऑर्बिटल है एक एटम का, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. This is another p orbital which also consists of one unpaired electron. So ये बाकी दो वैकेंट है ना, तो उसमें तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है नहीं, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन. हाँ, ये अपोजिट स्पिन होना चाहिए. ओके, सिमिलरली अगर समझो यहाँ पे मैंने दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखे ऐसे. Now here there is a formation of bond between the overlapping of these orbitals. तो ये पेयरिंग हो गया, एक बॉन्ड. ये दूसरा पेयरिंग हो गया, दूसरा बॉन्ड.
मतलब अभी कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने बॉन्ड बन सकते हैं। अभी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो एक बॉन्ड बनाएगा, 2 रहेंगे तो 2 बॉन्ड, 3 रहेंगे तो 3 बॉन्ड बना सकता है। ओके, यस, गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट, The distance at which the attractive and repulsive forces balance each other is the equilibrium distance between the nuclei of the bonded atoms. At this distance, the total energy of the bonded atoms is minimum and stability is max. अच्छा जरा पेजेस टर्न करो और उसमें ना हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो जरा है क्या याद, देखो जरा, ऐसा कुछ तो ग्राफ था, याद है क्या वत्सल? क्या सर? ऐसा एक ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया था एकदम शुरुआत में, जब ये चैप्टर चालू किया था। Yes sir, yes sir, it is there. है Yes ना? sir. हाँ, तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो बॉन्ड डिस्टेंस रहेगा, मतलब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस आई कंसिडर एज ए मिनिमम डिस्टेंस। मतलब उसके और मैं पीछे गया, मतलब और अंदर गया तो रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, और अगर मैं और दूर गया तो भी वही होगा, अट्रैक्शन कम होगा, एनर्जी बढ़ेगा। ये जो डिस्टेंस है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन, ना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है ना रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, और ये जो एनर्जी है उस एनर्जी को बोलते हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी। यस, ओके। हाँ कौमुदी, नेक्स्ट वन कौमुदी। हाँ वाचना, नेक्स्ट पॉइंट, 6th point, 7th point. Electrons which are paired in the valence shell cannot participate in bond formation. However, in an atom, if there is one or more vacant orbital present, then these electrons can unpair and participate in bond formation, provided the energies of the filled and vacant orbitals differ slightly from each other. हाँ, ये एक important point है। मैंने अभी बताया था, if there are paired electrons, देखो मैं सिनारियोस बता रहा हूँ। सपोज ये अपना p ऑर्बिटल है, ओके, और उसमें अपने पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एक एटम है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझो समझो इतने दो ही, ऐसे। अभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट अगर समझो मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है, मतलब इसके आगे वाला ऑर्बिटल कौन सा है, डी ना, और अगर मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। एंड इन एक्साइटेशन नाउ वी हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 1, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और यहाँ पे भी एक आएगा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो अभी कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 4 बॉन्ड बन सकते हैं। So electrons which are paired in a valence shell cannot participate in a bond formation. However, ये जब मैं एग्जांपल लूंगा तो मैं और तुम लोग का अच्छे से समझ में आएगा ये पॉइंट। सपोज वहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है बाय एक्साइटेशन। जरूरी क्या है, वो मतलब 3D से 3p से वो 4D में नहीं जाएगा, 2p से 3p में नहीं जाएगा, बट 3p से 3D में जाएगा, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम। हाँ कंडीशन देखना, प्रोवाइडेड द एनर्जी डिफरेंस
between the vacant orbital and filled orbital must be slightly differ. Must be slightly differ. Understood? Yes, Atharva Rao. Read the next point. Atharva Rao. During bond formation, the s orbital, which is spherical, can overlap in any direction. The p orbitals can overlap only in the x, y, or z directions. Similarly, d and f orbitals are oriented in certain directions in space and overlap only in this direction. Thus, the covalent bond is directional in nature. Correct. इसलिए हम लोग जब भी कोवैलेंट बॉन्ड दिखाते हैं ना, वी पुट अ डैश. हाँ, ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, ये टोटली न्यू कंसेप्ट है फॉर यू पीपल. इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आया? अभी देखो, इंटरैक्टिंग फोर्सेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. तो ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, दिस आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी. तो यहाँ पे कौन से इंटरैक्टिंग फोर्सेस होते हैं? जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन between the electrons and electrons, force of repulsion between the nuclei, and force of attraction between electron of one and nucleus of other, and vice versa. समझ में आ रहा है? यस. तो ये हो गया अपना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ बेसिक पोस्टुलेट. ठीक है, थोड़ा हम लोग अभी और डिटेल में उन पोस्टुलेट्स को पढ़ते हैं. यस. Yeah. So I'm giving you few points for the valence bond theory. ये points लिखेंगे तो भी चलेगा एग्जाम. फर्स्ट पॉइंट मेरे साथ लिखो इसको. To form a covalent bond, atomic orbitals, अभी से मैं इसको बोलूंगा AOs. Atomic orbitals of two atoms must come sufficiently close to each other such that they start overlapping. Okay, this is the first point. Second point,
overlapping of orbitals must have half filled must be half filled with opposite spin electron. Okay. Third point. Extent of overlapping. Acha, for the formation of coordinate bond to form a empty orbital, so वो हम लोग D block में पढ़ेंगे. D and F coordination compound 12th standard में पढ़ेंगे. अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर बनाना है तो एक ऑर्बिटल में वेकेंट ऑर्बिटल और एक एटम में वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. ओके. Extent of overlapping should not be more than 50%. Otherwise, electron repulsion take place. Fourth point. Greater the overlapping, stronger will be the bond. Okay. More will be the bond energy. More stability of compound. Fifth point. Orbitals undergo two types of overlapping. Orbitals undergo two types of overlapping. One, axial overlapping, axial or head-on overlapping, and B, lateral or sidewise overlapping. So axial overlapping leads to formation of strong bond, that is sigma bond. Lateral overlapping, okay,
ये हो गया 5 पॉइंट. नेक्स्ट वन. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. बाकी है बहुत सारे जो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं. ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है. जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे मेंशन किए गए टेक्स्ट बुक में. So now let us go for the types of overlapping. ये पहले लिखा ना सब लोगों ने. Now, extent of overlapping depends upon two factors. One, the nature of orbital, and second, nature of overlapping. Okay. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ. Here I am writing extent of overlapping. Extent of overlapping depends on two factors. First, nature of orbital. P, D and F orbitals are directional and therefore there will be maximum overlap. S orbital is a non-directional and therefore it has minimum overlap. Okay, so first one is nature of orbital. Nature of orbital. ऑर्बिटल डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या कि अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो व्हाट इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल? px, py, pz. So it is along the x axis, along the y axis and along the z axis. Same way d orbital है, same way f orbital. So p, d and f orbital. p, d and f orbital have a directional characteristic. Have what? Directional characteristic, and therefore there will be maximum overlapping. Okay. So here I am writing P, D and F orbitals form what? Directional characteristics. Directional bond, maximum overlapping. ठीक है. While s orbital
non-directional bond. I cannot say minimum overlapping, but less overlapping, we can say. Okay, less overlapping. ठीक है. Second factor मैंने बताया कौन सा? Nature of overlap. So coaxial overlapping is a more overlapping. Collateral overlapping is a less over. I'll show you a diagram. Okay. Second one is nature of overlapping. Nature of overlapping. क्या होगा? Coaxial overlapping कोएक्सियल अभी यहाँ पे एक्सिस कौन सा पकड़ेंगे? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. कोएक्सियल ओवरलैपिंग was maximum overlapping. ओके, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं. देखो यहाँ पे ये अपना पी ऑर्बिटल है, ये सेंटर न्यूक्लियस हो गया. ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये भी सेंटर न्यूक्लियस हो गया. तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये हो गया ना. तो ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा. So this is called the internuclear axis. मतलब क्या? Line joining the two nuclei. भाई दूसरा जो है lateral overlapping. Lateral overlapping. अभी lateral overlapping में क्या होगा? यहाँ पे मिनिमम ओवरलैपिंग होता है, और मतलब ये देखो ऐसे होगा. ये p ऑर्बिटल है. So this point, ये जो है ना, ये नोड, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये न्यूक्लियस है एक्चुअली. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द प्लेन. डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना. ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, उसके ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसके अबव और बिलो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया. और यहाँ पे न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट हो गया. तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग में अट्रैक्शन कम होगा. इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? मिनिमम ओवरलैपिंग. Please write down this, note down this point. सब लोग लिख रहे हैं ना? Hello, everybody. Yes, sir. Yes, sir.
चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी। So let us understand now the coaxial overlapping, different types of overlapping in according to the VBT. So we have coaxial overlapping. Coaxial overlapping. So the first one is SS overlapping. First point is what? SS overlapping. Then we have a SP overlapping, and then we have a PP overlapping. Okay. So let us understand SS overlapping. SS overlapping. Now SS overlapping stand for what? Half filled S orbital is overlapped by half filled S orbital of another. तो ये न्यूक्लियस है. This is a nucleus. और समझो मैंने ये इलेक्ट्रॉन लिया. Let us consider this is hydrogen atom. Hydrogen में होता है ना 1s1. Hydrogen is what? 1s1. अभी जो दूसरा हाइड्रोजन रहेगा वो कैसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा. अब तो मेरा नहीं आया सेम, बट ओवरलैप मतलब ये एक्चुअली याद रखना, ये स्फेरिकल शेप स्टैंड फॉर व्हाट? Spherical shape stand for s orbital. Okay, so when the overlapping is taking place, जब overlapping होगा तो overlapping कैसे होगा? देखो, there is a formation of ऐसे. अच्छा, यहाँ पे मैंने बताना भूल गया मैं तुम लोगों को, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये भी न्यूक्लियस है, and here we have a paired electron. Electrons get paired. This is nothing but hydrogen. Now just look at here. S orbital spherical shape, तो इसको कुछ particular direction नहीं, particular direction, इसलिए इसको भी no direction. So मैं ऐसे लिखूंगा no directional bond. No directional bond. हाँ, तो मैं ये बताना भूल गया यहाँ पे. जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड. जब लैटरल ओवरलैपिंग मिनिमम ओवरलैपिंग होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड. पाई पाई ये वाला पाई और मैथमेटिक्स वाला पाई, उसमें कुछ संबंध नहीं है. ये रिप्रेजेंटेशन है. सिग्मा पाई ये रिप्रेजेंटेशन है. नहीं तो तुम लोग बोलेगा सर इसका वैल्यू 3.14 है क्या? तो नहीं, वो पाई अलग है और ये पाई अलग है. अंडरस्टूड? हाँ, तो प्लीज नोट डाउन दैट whenever there is a coaxial axial overlapping, there is a formation of sigma bond. Whenever there is a collateral overlapping or lateral overlapping, there is a formation of pi bond. Okay, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में हमेशा कोएक्सियल ओवरलैपिंग है, तो इसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है. तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया. So this is what SS overlapping. दूसरा ओवरलैपिंग देखो अभी, SP overlapping. SP overlapping. इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को. हाइड्रोजन HF के फॉर्मेशन ऑफ HF. ना HF में हाइड्रोजन 1s1 है और फ्लोरीन क्या होगा? देखो 1s2 2s2 2p5. So if you write, so the pairing take place and 2p5 कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 2 3 4 and 5. तो देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कैसे होगा? ये है हाइड्रोजन और ये एक दो तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. So I'll write a structure like this way. ये क्या है? p ऑर्बिटल का शेप ऐसे होता है, तो ऐसे रहेगा. ये उसका फ्लोरीन का न्यूक्लियस या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस H and F.
Now when the overlapping is take place, क्या होगा देखो, ये हो गया overlapping, so the overlap. All these are the imaginary structures, remember that. H है. अभी ये भी कौन सा, s orbital जब भी involved होता है, there is the formation of sigma bond. Okay. तीसरा overlapping है pp overlapping. pp overlapping. इसमें एग्जांपल मैं बता रहा हूं, F2 फ्लोरीन F2, तो उसमें कैसे होगा, ये है अपना p ऑर्बिटल ऑफ 1f, ओके, और दूसरा f और दूसरा p ऑर्बिटल ऑफ अनदर f, जिसमें भी आवर अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन. नाउ देयर इज अ कोएक्सियल ओवरलैपिंग. कोएक्सियल ओवरलैपिंग मतलब ऐसे होगा, right? So that is nothing but f. Now this coaxial overlapping always gives you what? Sigma bond. Is that clear? Yes. Please draw this diagram. Draw it properly, huh?
Yes, done. Everybody done? Pratik. Yes, Pratik, done. Okay, so now this is coaxial overlapping. Let us understand now sideways or lateral or parallel overlapping. Okay. Parallel or lateral overlapping. It is also called as the sidewise overlapping. Sideways overlapping. Okay, overlapping which takes place above and below the internuclear axis is known as lateral overlap. Okay, उसमें example देखो अभी first PP overlapping. PP overlapping. So when I talk about PP overlapping, देखो कैसे होगा? ये p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. Just now I showed you ना. So the overlapping is taking place like this way. ये ऐसे होगा. So this is your internuclear axis. So actually it looks like this way. ये है अपना internuclear axis. See, orbitals are nothing but what? Electron density. Na? So the electron density is now looking like this way. It looks like this way. Okay. So pi bond में जो electron density दिखेगा ना वो ऐसे रहेगा. तो इसको बोलते हैं pi bond. हाँ, ये एक ही बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड है, ये ऊपर एक दूसरा ऐसे नहीं है. दिस इज वन बॉन्ड ओनली, पाई बॉन्ड बोलते हैं. दिस इज अ न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस है. एग्जांपल बताता हूं. सपोज इफ आई से O2 ऑक्सीजन. ऑलवेज रिमेंबर पाई बॉन्ड का इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होता. मतलब क्या? देखो आई विल एक्सप्लेन यू. इफ आई टॉक अबाउट, अगर समझो मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्या होगा? 1s2 2s2 2p4, राइट? 2s2, so एक लोन पेयर हो गया इसमें. एंड p में कैसे रखेंगे हम लोग? 1, राइट? ये 2, ये 3 और ये हो गया 4. सो कितने ऑर्बिटल, कितने हाफ फील्ड? 2 हाफ फील्ड बच गए, ठीक है नहीं? तो अभी यहाँ पे अथर्व 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 कल. सो हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म. तो इसमें कौन से ऑर्बिटल है? देखो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है. तो अभी यू नो p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये हो गया एक ऑर्बिटल और दूसरा हो गया ऐसे परपेंडिकुलर. ये भी हाफ फील्ड, इसमें भी हाफ फील्ड है. ये दूसरा एटम है. दूसरा एटम में कैसे होगा? ऐसे ही होगा. इज दैट क्लियर? और जब बॉन्ड बनेगा तो ये अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना. तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा? ऐसे बॉन्ड बनेगा, राइट? ये हो गया सिग्मा बॉन्ड. एंड बिसाइड दिस देयर इज लैटरल ओवरलैपिंग बिटवीन these two orbitals. ये ऐसे अभी यहाँ पे हम लोग शो नहीं कर सकते because the distance is very small. ये lateral overlapping possible है. तो इसका मतलब ऑक्सीजन में एक बॉन्ड सिग्मा है तो दूसरा बॉन्ड कैसा है? पाई. तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, O2 O डबल बॉन्ड O.
अगेन आई एम टेलिंग यू, ये एक ही बॉन्ड है, वो हम लोगों ने वीबीटी में पढ़ा, एक ऑर्बिटल एक बॉन्ड, तो ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, मिलके एक बॉन्ड बने, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं, N2, N2 कैसे होता है, बोलो, N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। सो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है एक एटम पे। यहाँ पे ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नाइट्रोजन में क्या होगा, मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ना, और तीसरा ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, right? They are mutually perpendicular to each other. Can you see my hand? तो ये ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। मतलब ये पूरा ऐसे रहेगा, ये पूरा ऐसे रहेगा, ये पूरा ऐसे रहेगा, समझ में आया। तो वैसे ही ये p ऑर्बिटल है, ऐसे ही है यार, मतलब p ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, x एक्सिस px, py and pz। अंडरस्टूड? कैन यू सी हियर? यस एवरीबॉडी? हेलो, Yes, sir. देख सकते हो ना। तो ये p ऑर्बिटल ऐसे है, तो ये हो गया अलोंग द x एक्सिस, हाँ, ये हो गया अलोंग द y एक्सिस, और ये जो है दिस इज परपेंडिकुलर, सो दीस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर साइड, हाफ फील्ड है तीनों भी। अभी दूसरा, ये एक नाइट्रोजन हो गया, अभी दूसरे नाइट्रोजन का सेम ऐसे ही होगा। तुम लोग जब ड्रॉ करोगे ना तो पहले ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करके लेना, इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ डायग्राम। ये px, ये py, ये pz। अब जब ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये दोनों के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग, इससे एक पाई बॉन्ड बना। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका, और जो तीसरा बॉन्ड रहेगा ना वो ऐसे रहेगा ना, ये अपना p ऑर्बिटल इसका है ऐसे, ये भी p ऑर्बिटल इसका ऐसे है, तो उसमें जो लैटरल ओवरलैपिंग होगा वो ऐसे होगा। समझ में आया कैसे ट्रिपल बॉन्ड बना वो? कैन यू सी हियर? सो यूज्ड कलर्ड पेन, ऐसे होगा लैटरल ओवरलैप। So we have a nitrogen carries 2 pi bond and 1 sigma. Please draw this.
यस, हो गया। जैसे PP ओवरलैपिंग है, वैसे PD ओवरलैपिंग भी होता है। दैट ऑल्सो गिव्स यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। DD ओवरलैपिंग भी होता है, दैट ऑल्सो गिव्स यू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। एक PD का मैं डायग्राम बता देता हूँ कैसे होता है वो। उसमें ये हो गया लिख के, एवरीबॉडी डन दिस पार्ट? हेलो, डन ना? ओके, सो याद रखना, जब भी हम लोग PD ओवरलैपिंग की बात करते हैं, PD ओवरलैपिंग, सो d ऑर्बिटल जो है ना, dxy, dyz और dxz होना जरूरी है, याद करो। ओके, सो ये है अपना p ऑर्बिटल, एक वन एटम का, एंड dxy dyz, तो जनरली इट हैज अ शेप लाइक दिस, मतलब वो तो डबल डबल शेप होता है, ऐसे होता है ना, लेकिन वो राइट। When the overlapping take place, the overlapping is like this way. Understood? So इसको बोलते हैं P pi, D pi overlapping, और P pi D pi bond. Pi bond कैसे बना? Because of the P overlapping, P orbital of one atom and D orbital of other. Similarly DD, अब ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, ओके। डी पाई में कैसे होता है देखो, DD ओवरलैपिंग में D orbital of one, तिथे जाऊन बसलं की काम झालं है ना, and D orbital of another orbital. ओके, जब ओवरलैपिंग होगा ये दोनों के बीच में होगा, सो वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस वे। अच्छा, ये सेम आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। इसको बोलते हैं डी पाई बॉन्ड, ठीक है, राइट डाउन। So now let us go for the next concept, distinguish between sigma bond and pi bond. Okay, there is एक delta bond भी होता है, but it is
beyond the scope of our syllabus. Okay. So what is the difference between sigma bond and pi bond? Okay. First point. Sigma bond is formed because of axial overlapping formed by coaxial overlapping, है ना? Pi bond is formed because of collateral overlapping formed by collateral overlapping. करेक्ट? मतलब इसके आगे ऑर्गेनिक में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड while pi bond is weak bond. क्यों? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होता है बिटवीन द न्यूक्लियर, सो अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होता है. पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है. ओके. इलेक्ट्रॉन क्लाउड is along the internuclear axis. तुम लोग पूरा लिखना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ओके. इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मैं बोल रहा हूं सुनना प्रतीक, इज अबव. बाद में वापस सर आईएनए क्या है पूछोगे तो फिर 10 बार लिखना पड़ेगा उसको. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव and below the internuclear axis. Above and below the internuclear axis. Understood? Fourth point, it has independent existence. It has independent existence. To form a pi bond, sigma bond form होना जरूरी है. So it always exists. It always exists with sigma bond. Okay. Point number 5. Free rotation of sigma bond is possible. Free rotation of, मैं ये बताता हूँ, sigma bond is possible. पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है. नो फ्री रोटेशन, क्योंकि जब तुम लोग उसको रोटेट करने जाओगे ना वो ब्रेक होगा. ओके. ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड. ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड by sigma bond. Here no geometry. Okay, so pi bond is geometry of a compound is not given by pi bond. Geometry of compound. अभी ये geometry क्या है सर? Wait, देखेंगे हम लोग. Geometry of a compound is not shown by pi bond. Is that clear? Please note down these points.
Okay, now let us understand our calculation of sigma bond and pi bond. ये भी हम लोग देखते हैं. Okay. So now we know how to draw Lewis structure. Lewis dot dash structure हम लोगों ने देखा है, बराबर. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ calculate number of sigma bond, pi bond and lone pair. Okay, तो ये है example. Then number of sigma bonds, then number of pi bonds, and hence number of lone pairs. Okay, ठीक है. चलो देखो अभी. So let us consider the structure of ammonia. तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया था, कुछ याद है? लुईस स्ट्रक्चर. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन हो गए, बचे 2. इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, लोन पेयर. तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है इसमें, बोलो जरा जानवी. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स हियर? हेलो जानवी. Is out. Oh, she's there. Yes, 3 sigma bond. How many pi bonds, Janvi? 0. 0. Janvi कौन बोला? अच्छा. And how many lone pairs? 1 lone pair. Correct. 1 नहीं, 1 ही रहेगा ना lone pair. Lone pair 1 है. Electrons नहीं, 1 lone pair. Now let us consider H2O. कैसे लिखते हैं हम लोग H2O? हाँ वत्सल, H2O का स्ट्रक्चर वो बीच में सिंगल बॉन्ड H और लोन पेयर्स रहेंगे ना. 2 और 2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 2 हो गए, 4 बचे. कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है. 0 पाई बॉन्ड है? और 2 लोन पेयर. समझ में आया? चलो अभी बेंजीन देखो. बेंजीन C6H6, इसका स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं ऐसे. पता है ना ये ऐसा स्ट्रक्चर? हाँ सर. अच्छा, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? हाँ, एक मिनट. 2 लोग गायब. ओके. अथर्व, काजवे, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? अथर्व, काजवे. Six sigma bond. अच्छा, how many pi bond? 0. 0 pi bond. So I just draw one structure. मतलब ये बेंजीन. हाँ एक मिनट. I'm coming. समझा वत्सल मेरे को? ईशान, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होगा ना. कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना, 1 2. यहाँ पे देखो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और फिर बाद में हर एक कार्बन पे 1 2 3 हाइड्रोजन 4. तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा हर एक कार्बन पे, बराबर है? तो इसका मतलब देखो CH बॉन्ड तो सिग्मा है. अभी देखो ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है. तो कार्बन 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 ऐसे 6 सिग्मा बॉन्ड, और CH ऐसे 6 सिग्मा बॉन्ड. तो इसका मतलब 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए. और ये देखो ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड पाई होगा, एक बॉन्ड सिग्मा है. तो इसका मतलब ऐसे कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है. लोन पेयर यहाँ पे नहीं है. अथर्व समझ लगा? Yes sir. प्लीज राइट डाउन दिस. और मैं एग्जांपल दूंगा, तुम लोग लिखो. SO2 करो. SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था. सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम लुईस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ड्रॉ किया था. उससे ड्रॉ करो. कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, ये मुझे बता दो. SO2
उसके बाद SO3, ओके, ठीक है। उसके बाद अच्छा पहले ये करो, C2H4, देन C2H2 करो। Put your answers in chat box.
अरे ओके ओके ओके, चलो फिर ये वाला पार्ट में रब करूं और चलो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। सो SO2, द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 ऐसा है। S, यह है डबल बॉन्ड O and lone pair. At the same time, there are two lone pairs on oxygen also. So सिग्मा बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर मैंने सेंट्रल एटम बोला तो सिर्फ एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम, और टोटल लोन पेयर कितने हैं? 5। SO3 का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं, दैट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वे, it is like this way, right? So each oxygen has two lone pairs. Okay, so there are 3 sigma bonds, 3 pi bond, 1 2 3 4, so 6 lone pair. Then we have C2H4, C2 carbon single bond double bond carbon, ये अपना इथीन है ना, इथीन। So how many sigma bonds we have? 1 2 3 4 Five. 5, 5 sigma bond, 1 pi bond, 0 lone pair. C2H2, so HC triple bond CH, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 0 लोन। इज दैट क्लियर? और एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, C2 CN ट्वाइस, ये थोड़ा अलग एग्जांपल है। C2 मतलब ऐसे रहेगा, C डबल ट्रिपल बॉन्ड C, CN कार्बन का ये वैलेंसी, ये कार्बन का 4 होना चाहिए ना, तो एक बॉन्ड इधर गया, तो बचे हुए 3 किसके साथ जाएंगे? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन में 1 2 3, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा। सेम थिंग विल हियर, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर्स। ओके, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखो। क्रॉस चेक प्रतीक। ओके, समझ में आया? तो अभी इस पे कितने होंगे बताओ? C2CN4 करो, सॉरी C2, हाँ C2CN4।
Okay, Atharva. Come on, guys, fast. Yeah, anybody is there who has not followed this? Vedant, Navalkar, Pandlaskar. Rohan, understood? I think this is quite simple. Hi, Mrunmai. Yes, sir. समझला? Yes, sir. Good. Chabi. तो अभी इसमें इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं, ये होगा C2 है ना, तो C डबल बॉन्ड C, ये अपना C2H4 जैसे हो गया ना, ये ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर. ऑल दीज कंपाउंड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो सब एग्जिस्ट करते हैं. तो तुम लोग समझना मत ये क्या रैंडम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए. कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are 9 sigma bonds. 5 bond, 2 और 2 4, 5, 2 7 और 2, 5 bond 9 and lone pairs कितने होंगे? 4. That's it. Okay. एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं हम लोग, then we'll stop over here. Now bond strength. Yes, very good. Bond strength अभी हम लोग एक्सप्लेन करता हूं मैं. बॉन्ड, एनीबडी इज देयर हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ये क्या चल रहा है सर, कहां से कहां, ऐसा कोई है क्या? संस्कार देखिए संस्कार. हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एप्लीकेबल व्हेन ऑर्बिटल्स आर क्यूब. सो ये ऑर्बिटल्स अगर दिया है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक अलग पूरा कंसेप्ट है जो हम लोग बाद में देखेंगे. बट अगर ऑर्बिटल्स, तो मैं ऐसे लिखता हूं, bond strength on the basis of orbital, on the basis of orbitals. Okay, bond strength is directly proportional to extent of overlapping, is directly proportional to extent of overlapping. Okay, bond strength is directly proportional to extent of overlapping, and the extent of overlapping P मतलब ये है sigma bond is greater than SP sigma bond, then SS sigma bond, then PP pi bond. How? What? How? Hi Pratik. How? What? नहीं समझने वाला क्वेश्चन, नहीं समझना. So I told you now, more the directional characteristic, stronger will be the bond. Na? PP has more directional characteristic than SP than PP. असं तेच तर सांगतोय. More the directional characteristics, ये तीनों में PP में सबसे, यहाँ पे किधर तो मैंने लिख के दिया है. I think हाँ यहाँ पे, हाँ ये देखो, नो डायरेक्शनल बॉन्ड, ये है डायरेक्शनल बॉन्ड, ये है डायरेक्शनल बॉन्ड. सो ग्रेटर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, ग्रेटर विल बी द ओवरलैपिंग. तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इधर होगा ये साइड पे, देन दिस, अंडरस्टूड. एंड PP पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नेचर. Okay.
Next point. Bond strength is inversely proportional to size of the orbital. Okay. So as principal quantum number increases, bond strength increases, because as we move away from the nucleus, attraction for the electron decreases. Second point, bond strength is inversely proportional to size of orbital. So what do you mean by that? As principal quantum number increases, n stand for principal quantum number, size of orbital also increases, and therefore bond strength decreases. So bond formed due to the 1 1, so n is equal to 1, n is equal to 1 is greater than 1 2, मतलब ऐसे हम लोग लिखेंगे 1 2 2 2 2 3 3 3 ऐसे. Bond formed due to the 1 1 1 2 is greater than 2 2 is greater than 2 3 is greater than 3 3 ऐसे. So मतलब ऐसा है, अगर समझो वहां पे 1s है और 1s 2s है. एग्जाम्पल बताता हूँ. 1s से बॉन्ड बना और 1s 2s से बॉन्ड बना, तो विच बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म बिकॉज ऑफ द 1s. अगर वहां पे ऐसे होगा 1s है और अगर मैं बोलूं 2s है, 2s then it is like this way. अगर समझो मैं बोलूं 2p है और 2p 3p है, तो 2p is a stronger bond than 2p 3p. Understood? Yes, समझ में आया? Then bond strength of bond strength of pi bond. Same 2 pi is a stronger bond than 2 pi 2d pi is stronger than 2 pi 3 pi and so on. Okay, लिख लेना ये. यस, हो गया लिख के सबका? हेलो, गुड. तो एक
small point, just look at here all of you. अगर ये है ऑर्बिटल, INA मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, कौन से टाइप का बॉन्ड बनेगा? SS ऑर्बिटल्स है, कोई भी एक्सिस रहे, S ऑर्बिटल का हैज नो डायरेक्शन, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा. SPX इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X है, सॉरी S ऑर्बिटल एंड PX इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X है. So whenever S orbital is involved, always there is a formation of sigma bond. So SPX, XPY, SPZ इंटर एक्सिस देखना क्या है. अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, देखो SPX और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? Y and Z है, नो ओवरलैप, जिसको मैंने क्या नाम दिया है? जीरो बॉन्ड. ये सर नहीं समझ में आया, ये कैसा सीन है बताता. देखो सपोज ये है अपना S ऑर्बिटल. सो आई एम जस्ट शोइंग यू दिस पार्ट ना, ये अपना S ऑर्बिटल और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये. तो ये समझो ऑर्बिटल है अपना PY और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है X. अभी इसमें जो ओवरलैपिंग होगा ना, वो ओवरलैपिंग इट लुक्स लाइक दिस वे ना. ये ओवरलैपिंग नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता. समझ रहे हो? ऐसा ओवरलैपिंग कभी पॉसिबल नहीं होगा. रीजन क्या है इसका? बिकॉज देखो ये जो अबाव द ऑर्बिटल है ना, इसका एक ओरिएंटेशन है, उसका अपोजिट ओरिएंटेशन इधर होता है. तो दो अपोजिट ओरिएंटेशन एक ही ओरिएंटेशन के वाले साथ ऐसे नहीं होंगे. तो कैसे होंगे? वो अगर ओवरलैप होने हैं ना, तो हमेशा ऐसे ही होंगे, ऐसे. अंडरस्टूड? यस, प्लीज क्लियर दिस पार्ट. हैव यू फॉलोड? क्या बताया मैंने? हाँ, अगर SPX इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X है, सिग्मा बॉन्ड. SPY इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Y है, तो सिग्मा बॉन्ड. SPZ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है, तो सिग्मा बॉन्ड. SPX बट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Y और Z है, नो ओवरलैप. SPY इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X एंड Z है, नो ओवरलैप. PZ XY, no overlap. Are you understanding? This overlapping is not considered. ऐसा ओवरलैपिंग कंसिडर नहीं करते. ओके, इसको जीरो बॉन्ड बोलते हैं. PX इंटर न्यूक्लियर एक्सिस X है, तो सिग्मा. PY इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Y है, तो सिग्मा. PZ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है, तो सिग्मा. PX इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Y और Z है, मतलब ऐसे. ये है समझो PX, ये भी है समझो PX, और ये अपना हो गया समझो Z एक्सिस. तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? साइडवेज ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैप. ये अलाउड है. वो क्या बना देगा? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई. ठीक है. अभी इधर देखो, PX PY मतलब एक ऑर्बिटल ऐसा है, समझो PX, ये PX है, और दूसरा ऑर्बिटल PY, तो PY मतलब ऐसे होगा ना, दूसरे एटम का. तो इसमें ओवरलैपिंग देखो, इसमें अगर मैंने समझो ओवरलैपिंग किया, समझो किया, तो देखो ना कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसे, विच इज नॉट अलाउड. क्योंकि यहाँ पे देखो ना इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं ना, यहाँ पे जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स एट द नोड. तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग ओवरलैपिंग में? इसलिए देयर इज नो ओवरलैपिंग. यू अंडरस्टैंड? सो देखो PX PY अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दूसरा कोई भी रहेगा, नो ओवरलैप. PY PZ नो ओवरलैप. PZ PX नो ओवरलैप, एंड सो ऑन. अंडरस्टूड? जेई मेंस के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है.
जेई मेंस के लिए अभी ये जो है ना 26 ऑनवर्ड उसकी जरूरत नहीं है, डेल्टा बॉन्ड वगैरह की जरूरत नहीं। ओके, यहाँ पे एक लास्ट में देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल और एनी ऑर्बिटल एनी एक्सिस सिग्मा। ये हाइब्रिड क्या है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यस, क्लियर? ये मैं पेज तुम लोगों को शेयर करता हूँ। इज दैट क्लियर? एनी डाउट ओवर हियर? समझ में आना कैसे? ये तुम लोग पेपर नोटबुक में लिख लेना बाद में। यस, followed? Anybody? Those who have a doubt, stay with me. बाकी लोगों के लिए thank you very much. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Thank you. Sir, thank you. Thank you, sir. Bye bye. सर लास्ट स्लाइड दाखव बॉन्ड स्ट्रेंथ.